May I now request Mr. Saran to formally felicitate Chef Vikas Khanna and Dr. Gandhi. Can we please have a round of applause for this momentous occasion? Can I get my bowl, please? Real bouquet, yeah. That's more like it. Yes, Dr. Gandhi, can we please have you on stage? Mr. Saran. Chef, before you leave the stage, I have to ask you something. So, do you cook with any dishes with cranberry at Bungalow? I want to understand a chef's point of view in this. So we do a lot of specials. People who follow Bungalow see that every day we try to create something new. So we have this dish which is roulade of chicken, which is served for Christmas. कम लग रहा है. Everyone, I think मेरी एक लाइफ का हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देता हूँ, थोड़ा easy रहेगा फ्लुएंसी में मेरी. I just feel that as a chef who has received such major opportunities in the world, it's my obligation to my country that I take everything what's amazing about Indian civilization and introduce it to the West. And it's also my obligation to bring some of the amazing things I'm seeing in the West. It could be produce, techniques, ideas, and bring them to India. मुझे लगता है कि बहुत ही एक यूनिक मौका मिला है मुझे इस उम्र के पड़ाव पे when I'm almost playing my last inning in the food business that I've got these opportunities which have never been heard before. Where a chef could be cooking for the president at the same time, could be hosting a show which reaches every home back home in the largest country in the world. I just feel that I have to be very careful what I touch. और उसमें एक चीज़ जो मुझे लगी बहुत ही यूनिक was always cranberries. It's a very mainstream part of American culture, and I've been consuming it from my morning cereal to creating salads with this, chaats with chutney. आप देखेंगे, I'll also do a small demo for you guys. And I do feel कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि I bring something which is amazing happening in the world, not just for taste, but also for the gut. It's very high in vitamin C, which really helps. And I do feel कि Indian खाने में जब हम देखते हैं हमारी history of our food, many ingredients came from abroad. Many ingredients. It's hard to even differentiate now कि जो चीज़ें हिंदुस्तानी नहीं है, जो यहाँ पे आई वो हमारी अपनी हो गई. And I do feel कि cranberry is one of them. Cranberry really fits into our palate structure. Let's talk about taste. Indians के लिए सर्वोत्तम taste, health. बातें अच्छी लगती हैं हमको, but healthy बातें करेंगे पर खाएंगे समझ से. But that's also okay. But I do feel कि as a changing lifestyle, and I did not know that Gen Z is not very diet conscious because they talk the most about food and this is what I'm eating and I'm so selective what I eat. But I do feel that our traditions are changing. What our grandparents or great-grandparents were eating, we are trying to bring those value systems back
in our kitchens. जो चीज़ें उनको available थी, जो आटे उनको available थे, जो grains available थे, अब कम somehow they are becoming superfoods, which are our basic ancient wisdom. वैसे ही अमेरिका में ये जो छोटी सी बेरी होती ग्रो, if you've seen how this is harvested, it's a pure work of art. Me and Sumit spend a lot of time on their fields. It's a brilliant work where it's not, the berry is not even touched. It's entirely processed with machines, and I do feel that it has something which is very versatile. अगर आप में से सबने टेस्ट किया cranberry, you can say the same thing what I want to say, that it touches our palate in a very chart जैसे touch करती है हमारे palate को. I do feel from taste profile, it also has an amazing chewy texture. Even if you put it in little biryani, somehow it has this thing where it hits out. It makes the food which is not normal mundane also interesting. Sandwich fillings, chaat filling, we'll do talk about that later. But I do feel that एक ऐसा ingredient हमें मिल रहा है, and which is going to be available to us in tons now. You saw 900% growth, which is not easy for a foreign ingredient. But I do consider cranberries now कि जो एक बार हमारे इंडिया आ गया वो हमारा हो गया. So cranberry is one of them. Thank you. Thank you. Thank you so much, Chef. It's been an honor having you here. We'll now open the floor to the media. So, Chef, what do you like most about cranberries? Is it the versatility? Is it the creativity? Is it the freedom it gives you? मुझे लगता है all of the above, but also I am absolutely an obsessive health freak. So mainly जो मैं चीज़ देखता हूँ healthy है, I do work on it. A lot of people in this room might not know that I've been spending millions of dollars in so many years, directly or indirectly, to bring Indian produce to the West. बहुत सारे शेफ्स जो अमेरिका में खाना बना रहे हैं, उनको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि when we started talking about agriculture and plantation, from jamun to phalsas to कड़ी पत्ते, so many things have my blood and soul into it. जैसे हम इंडिया को लेके आ रहे हैं बाहर, we also need to find to bring the world to India. I don't want us to be left behind in this race. Awesome. That was a... मैं generally I love without sugar, but it also depends what am I using it for. But we do feel that there is a subtlety of the इसमें जो sugar है, you know, if you do blind test, this is something which is like a थोड़ी सी खट्टी, a मीठी किशमिश से better. Kishmish is what, 450 रुपए किलो? This is 600 rupees kgs, approximately. So you're talking about kishmish, which has very less health benefits as compared to cranberries. And I do feel with the trade going forward, this is going to be our daily use in many things. आपके मीठों में जब जाती है, तो it just adds a different layer to it. And आपने कहा skin के लिए बहुत अच्छी है. मैं डॉक्टर साहब की skin और बाल देख रहा हूँ. Yeah, we kind of agree with you. सब खुश है. Skin पर बात से सब बड़े खुश हैं. There's no challenge. No, not really. We do feel it really makes a lot of difference. It just doesn't make so much of a difference. All right, we'll take the next question. Yes. So keeping up with the discussion at the moment where we're talking about cranberries being available in the market in the form of juices, at least that's what I've seen. But those juices are sweetened and therefore I don't see health benefits. I want you to tell us that which is your favorite sweet which is made out of cranberry. So, अगर मैं बोलूँगा तो शायद आपको याद भी रहेगा और बहुत लोग रास्ते में खरीद भी सकते हैं सामान. 1 cup cranberries, like it could be, I prefer mixing unsweetened and sweetened, which is also great. But और 1 can condensed milk का और 4 cup आपके almond flour का. Just mix it up. You're gonna thank me tomorrow. You can create one of the best burfis in the world under 2 minutes. Wow, lovely. Wow, that's lovely. Thank you. क्योंकि क्या होता है कि I also have to develop so much innovation because I work in New York where labor cost is crazy. So I always have to think about how I'm going to use cranberries in something new. हम एक लड्डू बनाते हैं, इसमें इसको stuff करते हैं. Because every day we have a new mithai in the restaurant. Every day. 365 days we invent a new mithai
which will be served in the Oh, restaurant. no, that's amazing and commendable. And this has really given me a very varied palate. Okay, I can put something so interesting, and people who do not who are tasting cranberries for the first time, इस room में है जिसने cranberry taste नहीं की है अभी तक? Is there anyone who's never tasted cranberries? In case you haven't, it's right in front of you. है क्या? So we are on our way to that. We are on our way to being embracing cranberries as a whole. आप देख लेना बहुत जल्दी. आप अगर मिठाई की दुकान पे जाते हैं वो बोलता है आपको कि भैया ये लड्डू है stuffed with cranberries. How do you suddenly feel? Wow, somebody is putting effort, thinking, not just for the mithai to sell it, which is important, but also for benefit for me. Cranberry jelly is so easy to make, and you're going to start seeing in a few months that how this is going to catch up. तो avocado के साथ हुआ है, in the last few months, it has become a part of every cafe. And you're going to see this, what is happening in cranberries. Many times when I go to any regular bakeries, there is always a cranberry cookie sitting on the counter. Cranberry health bar, protein bar, cranberry spice mix, cranberry nut mix, cranberry cheesecake. It is going to be taking over because of its versatility. Lovely, lovely. Thank you so much. This is why we love you, Chef. Because of your freedom and your knowledge, your freedom to explore the dishes and your creativity. All right, we'll take a question from the back. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Over here. Back. Over here. Yes, yes, we can hear you. Chef Vikas, I wanted to ask you कि अब आप बोल रहे कैनबरीज स्वीट्स में जा रहा है बहुत, तो क्या अभी लोकल मार्केट में तो मिठाई शॉप में तो अपने को अब तक नहीं मिल रहा है, तो कितना आप स्कोप रखते हैं कि इंडिया में ये होगा कि हम लोग को लोकल मिठाई शॉप में कैनबरी की मिठाई भी मिलेगी? हाँ, ये बिल्कुल होगा. हर चीज़ को समय लगता है. If you look at history of our Indian food, बहुत साल लगे होंगे टमाटर को भी हमारे खाने में आने के लिए. आलू को हमारे खाने में आने में बहुत समय लगा होगा. बट अभी बिकॉज आपके पास माइक है, मेरे पास माइक है, यहाँ हर जने के हाथ में एक मीडियम रिकॉर्ड करने का, तो हमारे पास चीज़ें जल्दी पहुँच रही हैं. सोचिए आलू को हर घर में जगह ढूंढने के लिए कितने सदियाँ लगी होंगी. क्रैनबेरी को उतनी सदियाँ नहीं लगेंगी because of the mediums we are using now, and also we become more curious as civilization, and what is good for us, we know how to judge it. You see, when we'll have this conference next year to celebrate this 900% growth will reach to 9,000%. And it is good. I feel it is always good when you come back to your country and you speak about health benefits. सर आप US क्रैनबेरीज के फेस हो चुके हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि बहुत ही एक फ़ख्र की मोमेंट है मेरे लिए. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स, ब्रिंग देम टू इंडियन फूड, और हमारे खाने को और इंटरेस्टिंग करें और इसमें थोड़े टेक्सचर्स डालें, थोड़ा फ्लेवर्स डालें. तो उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स को बाहर से सपोर्ट करके इंडिया में लेके आना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी प्राउड. इंडिया के जो हेल्थ इशू है इससे सॉल्व होंगे US क्रैनबेरी हेल्थ रिलेटेड? सर ये क्या बेनिफिट होगा? ये क्रैनबेरी जो होती है पानी में हार्वेस्ट होती है. दिस आर स्मॉल बेरीज. मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा दिखाने के लिए सबको कि इसका जो हार्वेस्ट मेथड है बिल्कुल अलग है. क्रैनबेरी फील्ड जो होते हैं हम उनको फॉल में शुरू होते हैं और उसके बाद हम उनको हार्वेस्ट करते हैं. उनको हम पानी में पूरा डुबो देते हैं. वी सिंक ऑल दी श्रब्स, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको पानी में डुबा दें और फिर जो क्रैनबेरी पक जाती है वो ऊपर आता है. इट्स अ वेरी यूनिक फ्रूट. इट्स अ रेयर अमेरिकन फ्रूट. तो उसका सर जो स्वीट और सवरने वाला जो टेस्ट है उसका कॉम्बिनेशन से क्या कहेंगे सर? जैसे हमारा चाट में फ्लेवर होता है, जैसे सोचो एक किशमिश है पर उसको थोड़ी सी खटास है, एक टेक्सचर वैसा रहता है. और इसके जूसेस जो होते हैं ऑल्सो वेरी हाई इन विटामिन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ. एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंडियन खाने में आराम से समा जाता है. सर इसे लेने से क्या फ़ायदा होगा? विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है और ये फॉल का और सर्दियों का फ्रूट है. और इसके बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने का तरीके हैं. शुगर प्रिजर्व है, नॉन शुगर किशमिश की तरह प्रिजर्व है, इसके जूसेस हैं. एंड आई डू फील कि इसकी सॉसेज हैं जो क्रैनबेरी जेलीज होती हैं. आई जस्ट फील कि एक नई जैसे एक नया लेयर दे सकता है आपके मीठे को, आपकी करीज को, आपकी चाट्स को.
Since the time you have started your journey as a chef, आपको लगता है तब से लेके अब तक Indians are much more, you know, they value their health a lot when it comes to this kind of ingredients. हाँ, होना भी चाहिए. हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ ईटिंग. फूड इज़ आर, जैसे हमारी दादियाँ कहती थी कि सबसे बड़ी जो है आपकी डिस्पेंसरी वो रसोई है. ये रसोई में ही सब जवाब है. उनमें अगर हम एक इंग्रेडिएंट क्रैनबेरी जैसा ऐड करते हैं विच एड्स टू आवर हेल्थ बेनिफिट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. How much you use this ingredient on your day-to-day? मेरा सुबह का सीरियल होता है ओट्स का, उसमें क्रैनबेरीज होती हैं, ऑलरेडी होती है. तो पैकेज ही ऐसा है और बहुत इजी है इसको चटनीज़ में यूज़ करना, चाट्स में यूज़ करना, स्टफिंग में यूज़ करना. भी देखेंगे आप कि मैं इसको स्टफिंग में यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारी बनाते हैं टिक्कियाँ बनाते हैं उनमें स्टफिंग करते हैं नट्स की, राइट. तो उसी में हम क्रैनबेरीज ऐड करते हैं, एक बाइट आती है, एक स्वीटनेस सावरनेस का टेस्ट आता है. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत प्यारा टेस्ट है सर. हमने वो रखा हुआ है खाया? सैंपल खाया. बहुत क्या बात है, थैंक यू. सर और जो यंग शेफ जो इंडिया से आ रहे हैं और उनके लिए आप क्या कहेंगे? पहले तो तेरे को कहूँगा भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत एडोरेबल है तो. थैंक यू. मैं यही कहूँगा यंग शेफ्स को, स्टे ट्रू टू व्हाट यू वांट टू बी. इंडिया में बहुत बेनिफिट मिल रहा है आप शेफ्स को. यू नो हमारे टाइम पे स्ट्रगल्स वर टोटली डिफरेंट, बट नाउ व्हेन आई एम सीइंग के बच्चे चूज़ कर सकते हैं क्या करना चाहते हैं. मैंने चूज़ किया सिर्फ इंडियन खाने को और उसे मास्टर करके मोस्ट ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ हर रोज़ अमेरिका में. मैं चाहता हूँ जो भी नया शेफ़ है, फील व्हाट यू वांट टू डू एंड इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर हार्ट. Thank you very much. Thank you so much.